Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 Chairman Karne, Junanimidi and LA officers are staff para Speaker Sharinganj Long Kumar Karne felicitation program Ayojan Kurisha. Longland District para Desh para Logot Milli Kina Yanchum Community Health Center Aro Yongyak Primary Health Center Day World Hypertension Day Manaishe. Waka District Administration para Nasha Mukh Bharat Abhiyan Bitor Sanis Multipurpose Hall Day One Day Agripreneurship Workshop Ayojan Kurisha. Mumbai laga Ghatkopur Day Billboard Girigina Mano Mura laga Mamla Day Mumbai Police Crime Branch pra Company Malik Businessman Bhavesh Binde ke giraftar Kurisha. Hello viewers, अपने सबके स्वागत करते हैं NUTV News Now Day. मुझे आशनिला तो तमाई आवे इकिलोत साइलो अजला बखबर. Nagaland Legislative Assembly Secretariat Conference Hall Day Thursday in officers or staff pra Nagaland Legislative Assembly Speaker Sharingan Long Kumar Karne felicitation program ekta ayojan kurishe. Idu program to Long Kumar ke Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 Day Chairman or Northeast Regional Institute of Parliamentary Studies Training and Research Day President Junanimity ase. Long Kumar pra CPA की धन्यवाद दिशे ताई के विश्वास करे कि ना इतु responsibility दिया निमिटे इतु लगोत Nagaland Legislative Assembly लगा officers और staff कान के मिली के ना काम कुरबले बिंटी कुरिशे. National Socialist Council of Nagaland NSC and IM para Naga Army Hebron Camp Laga General Headquarters Church Day Thursday the Naga Plebiscite 1951 ke manaishe. NSC and Vice Chairman Tongmit Wangnao para Presidential Speech dishe Naga People's Movement for Human Rights Naga Hoho Naga Students Federation Naga Mothers Association Gobbled Naga Forum Manipur pra United Naga Council Arunachal Pradesh pra Tirapt Changlang Longdan People's Front aro Myanmar pra Naga People's Organization kan special invitees thekishe. God for giving us the courage to commemorate together the Naga Plebiscite Day after 73 years. May 16, 1951 was a red letter day in the history of the Naga freedom struggle when the Naga plebiscite was conducted to reaffirm the declaration of the Naga Independence Day that was announced before the world on 14 August 1947. It was the day the Naga portrayed himself loud and clear with the home impression in which 99.9% of the Nagas voted for sovereign Naga nation. This was the occasion of an episode which is of more than making a striking statement on Naga independence. It was the most powerful symbol of Naga people in alienable right for sovereignty. Not only does it represent the virtue of being Nagas, it also ignited the flame of irreversible political identity of the Nagas as a sovereign nation. My dear countrymen, let the historical truth be told. Why the Nagas, under the banner of Naga National Council, took the crucial step to conduct Naga plebiscite. Let us recollect the words of NNC President Eza Tiso on the Naga plebiscite day. I quote,
We are here today to reaffirm the stand of our Naga nation that we do not need India and we do not want her. We are here today to prove to India and to the world that Nagaland is united and that our nation aspires the same conviction to continue to be independent as a distinct nation as we have already been the sovereign national state of the Naga. Naga Students Union Delhi para Thursday din Naga Plebiscite Day manaikena Indian Social Institute Lodi Road, New Delhi the program chlishe. NSUD General Secretary JPY Chisho para program chair kurishe. University of Delhi Professor Yaringam Awongshi para evente kotha kurikina kushi ki साल 1951 लगा नागा प्लेबिसाइट टू नागा पॉलिटिकल मूवमेंट ए सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट असे NSUD लगा फॉर्मर लीडर्स NSUD फेडरेटिंग यूनिट्स दिल्ली बेस्ड फ्रंटल नागा ऑर्गेनाइजेशंस स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली दे थाका डांगोर नागा लीडर्स आरो नागा गिरजा लीडर्स खान इवेंट ए शामिल थकिशे Longland District Pradesh Pura Logot Milikina Friday didn't measure your blood pressure accurately, control it, live longer. Lagat Team Tributor Yachimt Community Health Center Aro Young Nyamt Primary Health Center Day World Hypertension Day Manaishe. Chief Medical Officer Office Pra Press Release Dikina Janaishe ki Short Programmed Acta Quade Non-Communicable Disease DPO Dr. Len Pichang para Janta Khan के hypertension ऊपर जानकारी दिशे सब मानो एकता normal weight maintain करेगना होताई exercise करबले डॉक्टर para कुशे प्रोग्राम कोटम हुआ पीछे यांचम CHC Ayush Medical Officer Dr. Visino Nakropra लुइकिना beneficiaries कान के free checkup देगना consultation दिशे Waka District Administration pra Nasha Mukh Bharat Abhiyan Bito Friday din Sanis Multipurpose Hall day 1-day Agripreneurship Workshop Ayujan Krisham ICART Research Complex for NEH Regent Nagaland Center Aro ICART KVK Waka Logot Milikina Itu Workshop Ayujan Krishi Artate Horticulture Vegetable Science Scientist Dr. Albont W. Yantang Aro Agribusiness Incubation Center Nagaland in charge Moa Akampong Junt ICART KVK Waka CTO Aru Ranjan Singh Shiso Oceans ETF Sales Waka Project Manager Acho Kikon CSC E-Governance Services India led Waka District Manager Aro Medical Department para Representative Adjunct Workshop Day Resource Person Takishe Agripreneurship Schemes Opor Bosti Manokan ke Jankari Dishi Aro Drug Free Healthier Aro Happier Society ke emphasize Kurikina Jawant Manokant Korne Opportunity Thaka Opor Tebi Gyan Dishe Classic Rock Ballads para Thursday in Business Association of Nagaland Conference Hall Day Press Conference Ektalusha. In the press conference to Dimapur Mandeville Garden Day May 18 Sham 7 baje para concert thakibla nimite ase. Tickets to Crescendo Day available ase or concert day din to din tebi kiniwala paribo kushe. In the concert cell laga ekta hissado Mokokchung District Disabled Forum kanke dibokoi kina janaishe. Main purpose of starting up this event management was to promote Naga artists,
That's how we started off, and our first show was a successful one. And for this classic rock ballads, I'm grateful that we have even partners, Love East from Dimapur, and then we were able to gather so many renowned artists. So I'm grateful to all of them. The purpose of this project is we want the children and the parents coming together to the show. And I'm sure that the songs that we're going to cover are going to be known by all age group. And for those kids, we call it children or kids, come and listen to what your parents were listening. So we are looking forward to give a very good time, entertainment to all the audience, and especially we have all the greats, top artists. We started up this discussing about this concert in the month of March, and then when we started up, we thought like, if you're doing a concert, why not for a cause, nah? Because we want to give something to people who are in need. So we decided to do it for MTTF. MTTF means stands for like Mokchung District Disabled Forum, where they have 600 plus disabled. General ticket is 500, and we have silver ticket, which is 1,000, and we have 10,000, that is VIP. VIP, we have 2 tickets, that is 10,000 admit 4, and then we have 2,500 admit 1. We call this classic rock ballads, and this is an organic music. And the purpose of this project is we want the children and the parents coming together to the show. And especially we have all the greats, top artists, vocalists, like Moan Sang, who is known for his being the first Smart Idol and the vocalist of Ecstasy. We were in the same band. And our great Obed, he is famous for his Divine Connection as well as the MTV rock contest. Yeah, they were winners. And we have Aloke, who is very famous for her new release. National Testing Agency para Law Commons University Entrance Test लगा मामला ते मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा para एजेंसी के अप्रोच करवला से क्विकना एजुकेशन मिनिस्टर राकाम्ट ए सांगमा para थर्सडे इंटरनेशनल COT एग्जाम तो वापस आरो एक बार लोबले नहोइले मेघालय के एग्जाम करवले मांस कुरेकिना एजेंसी लगत जाबो कइसे COT एडमिनिस्ट्रेशन कांट एग्जाम शुरू होबले थागा टाइम पर हुईकिना भी स्टूडेंट्स का 3 घंटा ऊपर रखिबले दिया पीछे 1 जून स्टूडेंट्स पर एग्जाम थालिबले परा नाय इदु पीछे स्टेट सुकार पर इदु कदम थलोबले फैसला लिसे मुंबई लगा घाट कोपरदे बिलबोर्ड गिरी के मानो मुरा लगा मामला दे थर्सडे राति मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच प्रा बिलबोर्ड लगाई किना थका कंपनी लगा मालिक बिजनेसमैन भावेश बिंदे के गिरफ्तार करिसे बिंदे के राजस्थान लगा उदयपुर प्रा थर्सडे राति गिरफ्तार करिसे एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मालिक बिंदे के मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच प्रा गिरफ्तार करिसे Monday दिन 120 feet billboard actor गिरिकिना 16 मनो मुरिशे और 75 मनो जखमुशे इदु हादसा पीछे बिनते तो मुंबई पर पुलाई जैसे और ताई के गिरफ्तार करवले मुंबई पुलिस पर 8 टीम के डिस्पैच करिसे ईडी पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार कुरा ऊपर केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट के प्ली मांस कुरा के रिजेक्ट कुरा ऊपर केजरीवाल पर और एक पर सुप्रीम कोर्ट पर फ्राइडे दिन हियरिंग किया से केस तो शाम 2 बजे पर शुरू हुई से और बेंच जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा पर फ्राइडे दिन कइसे के दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तो विक्टिम स्वाति मालिवाल लगत नहोइकिना विभाव कुमार साइड खरा क्रिया से
যদি CM প্ৰায় এইটো ঘটনা হোৱা জানি কিনা থাকিছে কইলে তাই কিলে এইটো খিলাফ একো কদম চলোৱা নাই কৈ কিনা ৰেখাৰ পৰা সৱাল কৰিছে এইটো লগত একিউজ বিভাৱ কুমাৰকে ভি নটিচ দিছে কিন্তু এইটোকে স্বীকাৰ কৰা নাই এইটো নিমিত্তে আৰু একবাৰ নটিচ পঠাব এইটো পিছে নেসেসারি কদম উঠাব কৈছে के साथ मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी ऑफिशियली और हमने उसी दिन सुओ मोटो लिया जैसे ही मैंने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। मैं क्लोजली वॉच कर रही थी, ट्वीट्स पे भी मैं स्वाति जी को कह रही थी कि आप बाहर आएँ और कंप्लेंट करें। मुझे लगता है वो ट्रॉमेटाइज थी क्योंकि अपने ही लीडर के घर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह से मार पिटाई होगी, वो भी एक MP की, राज्यसभा MP की, जो हमेशा खुद महिलाओं की बात उठाती रही हैं। हमारे चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहे हों लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने ट्वीट पे कहा कि आई एम विद यू, यू कम आउट एंड कंप्लेन। काफ़ी मुझे लगता है सोचने के बाद या जब उनको लगा होगा कि वो बात कर सकती हैं तो कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और FIR रजिस्टर हो गई है, एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा। आप राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल तो फ्राइडे दिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लगा सेक्शन 164 बिटर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करबले निमित्ते दिल्ली लगा 30,000 कोर्ट जाइছে सेक्शन 164 बिटर मैजिस्ट्रेट पर मानो एकता लगा स्टेटमेंट और कन्फेशन पुलिस छानबीन करा समय लबले पारे थर्सडे दिन मालीवाल पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लगा 8 विभाव कुमार ऊपर असॉल्ट करा ऊपर FIR एकता दर्ज करिছে दिल्ली जबले थका एयर इंडिया फ्लाइट एक थर्सडे राति पुणे एयरपोर्टे तक ट्रैक्टर लगत लगा लगी हुई खबर हिसाब प्लेन टू पुणे एयरपोर्ट रनवे दे जा समय 180 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थकी किना तक ट्रैक्टर्स लगत लगिছে पैसेंजर्स और क्रू कुंट भी दुखम थोआ नाई किंतु प्लेन्स लगा नोज और टायर डैमेज हुई तो व्यूअर्स इतिहाने इमानही न्यूज़ আছে और खबर জানিবলৈ কাৰণে আপোনাক সব চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি।